Good evening. Good evening. Today is 14th December 2016, and we are now discuss about geographic coordinate system. Okay. So it is presented by Subir Kumar Dakwa, Vidyasagar University, Department of Geography and Environmental Management. Okay. Okay. Also starting our discussion. Geographic coordinate system. A geographic coordinate system defines location on the earth using three-dimensional spherical. Okay, so it describes locations, and it is a three-dimensional and spherical. It is okay, and a spherical surface, three-dimensional spherical surface here. And a geographic coordinate system is often incorrectly called a datum. हम इसे डेटम भी कहते हैं. तो ये क्या काम करता है कि ये जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये लोकेशन दिखाते हैं अर्थ सरफेस के ऊपर, एंड थ्री डायमेंशन जो स्पेरिकल सरफेस जो है उसको लोकेट कराते हैं. ओके, तो इट इज कॉल्ड विथ डेटम. ओके, but a datum is only one part of a geographical coordinate system. Okay, it is one part of geographical coordinate system. Okay, a geographical coordinate system includes an angle units of measurements. कितना एंगल होगा तो ये मेजर करते हैं. A prime meridian and a datum based on spheroid. Okay, a prime meridian and a datum based on spheroid. Prime meridian means the जो मेरिडियन जो प्राइम है, मतलब अंदर है, तो ए है प्राइम मेरिडियन. ओके, ए प्राइम मेरिडियन. ओके, तो जो ए प्राइम मेरिडियन. ओके, एंड डेटम बेस्ड ऑन स्फेरॉइड. ओके, ए फीचर इज रेफर्ड बाय इट्स लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स वैल्यूज. इट इज रेफरेंस्ड बाय इट्स लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड वैल्यूज. ओके, एंड longitude and latitudes are angle measurement. Okay, they are all angle measurement, latitude and longitudes value. Okay, and angle measured from earth center to a point on the earth surface. Okay, the angle are measured in degree. जो angle हो वो measure हम कैसे करते हैं, हम डिग्री से वो measure करते हैं. Okay, in a spherical system, horizontal or east-west lines are lines of equal latitudes or parallels. Okay, in a spherical horizontal or east-west lines, जो लाइन होता है ईस्ट वेस्ट का लाइन वो ऑफ इक्वल लैटिट्यूड और पैरेलल. ओके, तो उसके वो जो स्फेरिकल सिस्टम है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसको तो याद रखिए. एंड जो ईस्ट वेस्ट लाइन जो है वो इक्वली वो लैटिट्यूड उसके इक्वल लैटिट्यूड और पैरेलल होते हैं. ओके, एंड ऑन द अदर साइड वर्टिकल और नॉर्थ साउथ जो लाइंस आर लाइंस ऑफ इक्वल लॉन्गिट्यूड्स ऑफ मेरिडियंस. ये है लैटिट्यूड, लाइन ऑफ इक्वल लैटिट्यूड, एंड ये है लाइन ऑफ इक्वल लॉन्गिट्यूड्स ऑफ मेरिडियन. These lines encompass the global and form a gridded network called graticule. Okay, these lines are encompass and the global and form a gridded network, and it is called graticule. Okay, the line of latitude midway between the poles, the horizontal axis. Okay, the line of latitude midway between the poles. Okay, and the horizontal axis is called equator and defines the line of zero latitude. The vertical axis which defines the line of zero longitude, it is called prime meridian. Okay, it is called zero latitude. It is called zero latitude and it is called zero longitude. Okay, the prime meridian. Okay, it is prime meridian and it is zero latitude. Okay, and for the most geographic coordinate system, the prime meridian is the longest longitude. For most geographic coordinate system, the prime meridian is the longitude. Okay, so the prime meridian is the longitude. Okay, and that pass through Greenwich, England. जो इंग्लैंड है वर्ल्ड के अंदर, तो वो वहाँ से वो गया है. ओके,
passes through England. Okay, Greenwich, England. Other countries use as prime meridian longitude. Okay, longitude lines. Other countries जो इसको longitude lines के लिए पास करते हैं. Okay, pass through Bern, Bogota and Paris. जो Bern, Bogota और पेरिस के लिए पेरिस के अंदर हो गया है. तो यहाँ पर आप देखिए ये एक मैप है वर्ल्ड में. ये अगर अर्थ है तो इसका अंदर आप देखिए कि ये है लॉन्गिट्यूड लाइन, ये है लैटिट्यूड लाइन. ओके, तो यहाँ से कोई भी एंगल हम मेजर करते हैं. ओके, सेंटर से हम मेजर करते हैं. तो ये 55 डिग्री लैटिट्यूड जो मेजर किया है एंड 80 डिग्री जो अगर ए मेजर में इसको हम देखेंगे कि 80 डिग्री ईस्ट एंड 56 डिग्री नॉर्थ ये लाइन है. तो ये लॉन्गिट्यूड है, इसका लैटिट्यूड हम देखते हैं. ओके, तो यही है द वर्ल्ड एज ए ग्लोबल. ओके, द वर्ल्ड एज ए ग्लोबल sorting the net or the latitude and longitudinal. Okay, values. Okay, the world latitude and longitudinal values here represent. Okay, so and the next diagram is seen. It is latitude where equator is here. Okay, and it is the longitude. Prime meridian is its. Okay, it is the main center point. Prime meridian. Okay, and it is those two are cross across each other. So the earth's different latitude and longitudes are passes through the world. Okay, those are the latitude, those crosses the longitude line. Okay, so next, where the equator and prime meridian intersect, define their intersect, define the origin 0, 0. The globe is often then divided into 4 geographical quadrants. Okay, globe को हम 4 quadrant में हम divide करते हैं based on compass bearing from the origin. Above and below the equator are north and south, and to the left and the right of the prime meridian. Okay, are west and east. Okay, you know. Okay, it is अगर हुआ तो ये north होगा, ये north and ये south होगा, and ये west होगा and ये east होगा. Okay, तो prime meridian. Okay, longitude and latitude values are traditionally measured in decimal degrees. लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वैल्यू को हमने क्या कैसे डेसिमल डिग्री में हम डिवाइड कर सकते, ट्रेडिशनली मेजर करते हैं डेसिमल डिग्री में, और इन डिग्री में, मिनट्स में, और इन सेकंड में, डीएमएस, डिग्री मिनट सेकंड. ओके, लैटिट्यूड्स आर लैटिट्यूड मेजर्ड रिलेटिव टू द इक्वेटर एंड रेंज फ्रॉम -90 डिग्री. लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड रिलेटिव टू द इक्वेटर एंड रेंज फ्रॉम -90 डिग्री latitude. Okay, and the south pole it is to plus 90 degree at the north pole. Okay, south pole it is -90 degree and north pole it is plus 90 degree. Longitude is measured relative to the prime meridian. Positively up to 180 degree, and negatively it is -180 degree. So it is the earth, so it is the plus 180 degree, it is plus 180 degree, and it is minus 180 degree. Okay, so longitude as measured relative to the prime meridian. So positively up to 180 and traveling east. My east is minus 180 degree, and positively is plus 180 degree, plus 180 degree. Okay. When traveling west, measure negatively up to 180 degree. When traveling west, हम अगर traveling west में कर रहा है तो ये minus 180 डिग्री होगा. ओके, अगर हम अगर ईस्टर्नली अगर मूव करेंगे मेरिडियन पॉजिटिवली 180 डिग्री पॉजिटिवली, when traveling the eastward it is plus 180 degree. I have to clear discussed now. It is the right side. Here 180 degree is plus and it is minus 180 degree. Okay. It is if the prime meridian is at Greenwich, then Australia, which is south of the equator,
if the prime meridian is at Greenwich, the Australia which is south, okay, of the equator, okay, and east of Greenwich has positive longitude, and east of Greenwich has positive longitude, okay. तो ईस्ट है वो पॉजिटिव लैंगिट्यूड है, ओके, पॉजिटिव लैंगिट्यूड वैल्यू एंड नेगेटिव लैटिट्यूड वैल्यूज, ओके. So although longitude and latitude can locate exact positions on the surface of the globe, okay, they are located positive the exact position of the surface of the globe. They are not uniform units or measure. They are not uniform measures. Only along the equator, only along the equator does the distance represent. Only along the equator does the distance represent by 1 degree of the parallels. Only along the equator does the distance represent 1 degree of their parallels, and meridian that from a graticule. Geographic coordinate systems, the point 9 longitude approximate the distance represent by 1 degree of latitude. 9 latitude the approximate of the distance represent 1 degree of latitude. Sorry. This is because the equator is the only parallel as large as a meridian. This is because the equator is the only parallel as large as a meridian. Equator जो है वो parallel है is only parallel as large as a meridian. Circles with same radius as the spherical earth are called great circles. Equator is only parallel that as large as a meridian. Circles which with the same radius as the spherical earth are called great circles, okay. All meridians and the equator are great circles, okay. Above and below the equator, the circle defines the parallels of latitude get gradually smaller unit until they become a single point at the north and south poles. Okay, above the below the equator, above and below the equator, the circles defining the parallels defining and length of latitude get gradually smaller until they become a single point at the north and south poles, okay, where the meridians coverage, जहाँ पर meridian coverage कर रहा, okay, north and south pole में. As the meridians coverage towards the poles, as the meridian coverage towards the pole, okay, the distance represent by 1 degree longitude. Distance क्या डिपेंड कर रहा है 1 degree longitude के, okay, and decreases to 0. The 1 degree of longitude decreases to 0 on the Clark 1866 period. Clark 1866 period, 1 degree of longitude at the equator equal 111.321 kilometer. So Clark 1866 period, if we also describe the 1 degree of longitude 1 degree of longitude at the equator equals to 1.321 kilometer. Important, it is 1.321 kilometers. It is a Clark 1866 period, okay. While the 60 degree latitude, it is only 55.802 kilometer, okay. Since degree of latitude and longitude don't have a standard length, okay, you can't measure distance or areas accurately. You can't measure distance or areas accurately, okay. You can't measure it, okay, or display the data are easily on a flat map, okay, and or areas that accurately or display the data easily on a flat map or computer screen, okay. Next is spheroid and spheres, okay. Spheroid and sphere, the shape of the size of geographic coordinate systems, the shape and the shape and the size of the geographic coordinate systems, okay. The coordinate system surface is defined by a sphere of spheroid. Surface is defined by a sphere or spheroid. Surface को हम क्या define करते हैं कि sphere और spheroid. Although the earth is best represented by a spheroid. Although the earth is best represented by a spheroid, हम अर्थ को एक spheroid की तरह देखेंगे, okay.
और उसको रिप्रेजेंट करते हैं उस पीरियड के लिए। ओके, so the shape of the size of the geographic coordinate system surface is defined as sphere or spheroid. Although the earth is best represented by a spheroid, अर्थ को हम spheroid कह सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। The earth is sometimes treated as a sphere to make mathematical calculation, treated as sphere to make mathematical calculation easier, हम mathematical easily कर सकते हैं। The assumption that the earth is a sphere is possible for small scale maps। एजम्पशन क्या है कि अर्थ जो है ये स्फीयर इज पॉसिबल फॉर स्मॉल स्केल मैप्स के लिए, दो स्मॉलर देन जो स्मॉलर है देन 1050 लैक्स जो स्केल है उससे भी उसको स्मॉलर के उसको रिप्रेजेंट करते हैं 1:50 लाख स्केल को। ओके, उससे भी स्मॉलर है। And at this scale, the difference between a sphere and a spheroid is not detectable on a map। हम मैप में डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं मैप के अंदर। However, to maintain accuracy for large scale maps, हम मेंटेन करते हैं क्या accuracy of large scale maps को scales of 1:10 लाख और लार्जर, इससे भी लार्जर हो सकता है। ओके, वो उन्होंने पहले किया था वो स्मॉलर देन 1:50 lakhs एंड ए लार्जर मैप्स स्केल मैप द स्केल ऑफ 1:10 lakhs। ओके, स्फेरॉइड इज नेसेसरी टू रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द अर्थ। स्फेरॉइड जो नेसेसरी टू रिप्रेजेंट क्या करते हैं द शेप ऑफ द अर्थ क्या होगा। ओके, सो स्फेरॉइड एंड स्फीयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट, द शेप ऑफ द साइज ऑफ द जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम सरफेस डिफाइंड स्फीयर और स्फेरॉइड, और दोनों को ही दिखाते हैं। तो ऑल्दो द अर्थ इज बेस्ट रिप्रेजेंट बाय स्फेरॉइड, हम अर्थ को स्फेरॉइड कह सकते हैं। द अर्थ इज समटाइम इज स्फीयर, हम इसको स्फीयर ही कह सकते हैं। सो मेक मैथमेटिकल कैलकुलेशन इजीली हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। द एजम्पशन दैट द अर्थ इज स्फीयर इज पॉसिबल फॉर स्मॉल स्केल मैप के लिए वो अर्थ इज स्फीयर हो सकता है। दो स्मॉलर देन जब स्केल होगा 1:50 lakhs। ओके, एट द सेम टाइम एट दिस स्केल द डिफरेंस बिटवीन स्फीयर एंड स्फीरॉइड इज नॉट डिटेक्टेबल, उस समय वो डिटेक्टेबल ऑन मैप होगा ना, मैप में नहीं होंगे। ओके, However, to maintain accuracy for large scale maps, हम अगर मेंटेन करें लार्ज स्केल मैप्स के लिए स्केल ऑफ 1:10 lakhs और इससे भी लार्जर जो स्केल है, तो वो स्फेरॉइड इज नेसेसरी टू रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द अर्थ, उस टाइम वो शेप ऑफ द अर्थ को रिप्रेजेंट कर सकता है। ओके, सो ए स्फीयर इज बेस्ड ऑन ए सर्किल, ये स्फीयर जो है वो बेस्ड ऑन क्या पर डिपेंड करते हैं, और सर्किल के ऊपर डिपेंड करते हैं। व्हाइल द स्फेरॉइड नॉट इलिप्टिकल इज बेस्ड ऑन इलिप्स, it is a spheroid is dependent on ellipse। Okay, based on ellipse, the shape of the ellipse is defined by two radii। Okay, shape of the ellipse is defined by two radii, that means इसको हम डिफाइन करते हैं टू रेडी में। ओके, the longer radius of is called the semi major axis, the longer radius is called, हम इसको कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। ओके, एंड द शॉर्टर रेडियस इज कॉल्ड सेमी माइनर एक्सिस। द लॉन्गर जो रेडियस है इसको हम कहते हैं जो सेमी माइनर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, एंड इसको स्मॉलर जो है इसको हम सेमी माइनर एक्सिस कहते हैं। ओके, द मेजर एंड माइनर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स। ओके, rotating the ellipse around the seminar axis creates a spheroid। Rotating and the ellipse is around the seminar axis creates a spheroid। Okay, okay, then it's in this diagram polar axis and semi-polar axis. It is the equatorial axis, it is semi major axis, it is semi major axis. Okay, and it is semi minor axis. Okay, it is semi minor axis it is represent. Okay, so it is semi minor axis and it is semi major axis. Okay, so it is the important, and please remember that it is a sphere and it is spheroid, it is rounded. Okay, it is spheroid ellipsoid. Okay, and here you seen that it is the major axis and it is major axis and it is minor axis, Okay, so it is major axis and it is minor axis and semi major axis and semi minor axis it is. Okay,
and here you have a calculation, if it is in e square equals to a square minus b square by 2 by a square. Okay, because eccentricity को represent करते हैं, eccentricity p को represent करते हैं, flattering and describe the shape of the spheroid. spheroid का जो shape है, okay, इसको represent करते हैं, इसका shape को represent करते हैं a square minus b square by a square. Okay, okay, इसके बाद तो देखेंगे कि a spheroid is defined to either the semi-major axis and and the sometimes it is semi-minor axis b, or by a and the flattening. The smelting is the difference in length between the two axes expressed as a fraction or a decimal. इसको हम एक्सपेक्ट करते हैं फ्रैक्शन और डेसिमल में. ओके, द फ्लैटरिंग f इक्वल्स टू a इंटू b बाई a. ओके, f इक्वल टू फ्लैटरिंग जो है इसको हम डेसिमल में भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. और फ्लैटरिंग क्या, f फ्लैटनिंग क्या है, तो f इक्वल टू a माइनस b बाई a. द फ्लैटनिंग इज स्मॉलर वैल्यू. फ्लैटनिंग इज जो है वो स्मॉलर वैल्यू है. सो यूजुअली द क्वांटिटी 1 बाई f इज यूज्ड इंस्टेड. सैम्पल वैल्यूज areas A, sample areas A 6 lakh 37,000, 63 lakh 78,000, 78,137 meter. Okay, and here A represent the sample values. If here it is the sample value, it is meter, and 1 by A equals to 298.257 something it is. Okay, the flattening range between 0 and 1. The flattening range between 0 and 1. The flattening value of 0 means the two axes are equal. A flattening value of 0 means, okay, flattening value of 0 means the two axes are equal. Okay, resulting in a sphere. जहाँ पर वो एक्सेस जो है एक्सेस तो वो इक्वल हो रहा है, तो रिजल्टिंग इन स्फीयर, जो स्फीयर के रिजल्ट आते हैं, जो स्फीयर फॉर्म में आते हैं. ओके, द फ्लैटनिंग ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 0.003353. जो फ्लैटनिंग जो है वो क्या है ना 0.003353. ओके, एंड the quantity is the square of the eccentricity E that like the flattening describe the shape of a spheroid. जो अदर जो है वो eccentricity जो है वो क्या कर रिप्रेजेंट करता है, लाइक द फ्लैटनिंग को डिस्क्राइब करते हैं. ओके, दिस इज द शेप ऑफ द स्फेरॉइड. ओके, okay, and next is the defining different spheroids and accurate mapping. Okay, हम कैसे accurate map करते हैं. Okay, a different spheroid for accurate mapping. Okay, the earth has been surveyed many times. तो earth has been surveyed many times to better understand its surface features. हम surface features के जानने के लिए हम बहुत टाइम सर्वे करते हैं. Okay, and their particular irregularities, and जहाँ पर particular irregularities है. Okay, the survey have resulted in many spheroids that represent the earth. The surface represent the spheroid that represent the survey have resulted in many spheroid के represent करते हैं the earth. वो earth को भी represent करते हैं, मैंने स्फेरॉइड को भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो अर्थ का मैंने स्फेरॉइड को रिप्रेजेंट करते हैं. जनरली ये स्फेरॉइड इज चूजन टू फिट वन कंट्री. हम स्फेरॉइड की चूज करते क्या एक कंट्री के लिए. ओके, और ए पार्टिकुलर एरिया के लिए. ओके, ए स्फेरॉइड दैट बेस्ट फिट वन रीजन इज नॉट नेसेसरीली. A spheroid that best fits one region is not necessarily the same one that fits another region. So one region के लिए ये है, एवं others जो है वो others region के लिए वो फिट है. Okay, until recently. Okay, generally a spheroid is chosen to fit one country or a particular area के लिए. A spheroid that best fits one region, best fit है one region के लिए, और is not necessarily नहीं हो सकता है the same one that one fits another region के लिए नहीं फिट होता है. Okay, next. Okay, why okay
पहले देखा था until recently. Okay. Then why the North America data used period determined by Clark 1966. The semi major axis of the Clark 1866 period 63 lakh 78,206.1 meter. The semi major axis 63 lakhs 56,583.8 meter, because the same major and same minor axis it is. Okay, those lengths. Okay, and because the gravitational and surface feature variation, there have the gravitational and surface feature variation have. Okay, the earth is neither a perfect sphere not a perfect spheroid. Okay, spheroid. Earth is not a perfect sphere or not a perfect spheroid. Okay, satellite technology has revealed several elliptical deviation. हम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की यूज़ करते हैं ओके सेवरल elliptical deviation के लिए. फॉर एग्जांपल द साउथ पोल जो है इज क्लोजर टू द इक्वेटर देन द नॉर्थ पोल. ओके, साउदर्न पोल जो इक्वेटर के क्लोजर है, नॉर्थ पोल जो बहुत दूरी है. सैटेलाइट डिटरमाइंड स्फेरॉइड आर रिप्लेसिंग द ओल्डर ग्राउंड मेजर्ड स्फेरॉइड्स. सैटेलाइट डिटरमाइंड क्या करते हैं, स्फेरॉइड आर रिप्लेस करते हैं स्फेरॉइड द ओल्डर ग्राउंड मेजर्ड स्फेरॉइड्स. द ओल्डर जो ग्राउंड होता है मेजर्ड स्फेरॉइड्स के. ओके, फॉर एग्जांपल द न्यू स्टैंडर्ड स्फेरॉइड फॉर नॉर्थ अमेरिका. न्यू स्टैंडर्ड स्फेरॉइड जो नॉर्थ अमेरिका में इज GRS. ओके, GRS 1980. ओके, फॉर एग्जाम्पल न्यू स्टैंडर्ड स्फेरॉइड जो नॉर्थ अमेरिका में GRS 1980 में हुआ था, वो जो रेडी आर 63 lakhs 78,137 एंड 63 lakhs 56,752.31414 मीटर्स. ओके, नॉर्थ अमेरिका के. बिकॉज चेंजिंग एक यहाँ पर चेंज देख रहा हूँ हम. ओके, न्यू स्टैंडर्ड स्फेरॉइड जो है नॉर्थ अमेरिका में है. ओके, बिकॉज चेंजिंग ए कोऑर्डिनेट सिस्टम स्फेरॉइड चेंजेस ऑल प्रीवियसली मेजर्ड वैल्यूज. सो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो स्फेरॉइड चेंज होता है ऑल प्रीवियसली मेजर्ड वैल्यूज. मेनी ऑर्गेनाइजेशन डोंट स्विच टू न्यूअर एंड मोर एक्यूरेट. मेनी ऑर्गेनाइजेशन जो स्विच नहीं करते हैं कि मोर एक्यूरेट के लिए. ओके, स्फेरॉइड के लिए. Okay, next is datum. Okay, datum. While datum. Okay, while a spheroid approximates the shape of the earth. the spheroid है वो the shape of the earth को दिखाते हैं. The datum defines a position of the spheroid relief to the center of the earth. वो क्या रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ द अर्थ. द स्फेरॉइड डेटम जो डिफाइंस करते हैं कि पोजीशन ऑफ द स्फेरॉइड जो है वो रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ द अर्थ. सेंटर ऑफ द अर्थ के बराबर है वो स्फेरॉइड. ये डेटम प्रोवाइड्स ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर मेजरिंग लोकेशन के मेजर कर रहता है डेटम on the surface of the earth. It defines the origin and orientation of latitude and longitude lines. ये वो latitude and longitude lines को orientation को दिखाते हैं. Origin. Okay, whenever you change the datum or more correctly the geographic coordinate system, the coordinate values of your data will change. Okay, so हम जब चेंज करते हैं डेटा को और मोर करेक्टली करते हैं तो जियोग्राफिक जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो क्या करते हैं ना, उसका जो कोऑर्डिनेट वैल्यू है और डेटा और चेंज हो जाता है. ओके, हियर coordinates of DMS degree minute seconds of a control point in Redlands on NAD 1983. वो कंट्रोल पॉइंट जो है रेडलैंड्स ऑन NAD 1983. ओके, वो चेंज हो जाता है. ओके, 1983 में जो वो चेंज हो जाता है. ओके, हम यदि अगर चेंज करते हैं तो उसका भी वैल्यू चेंज हो जाएंगे. ओके, नेक्स्ट है -1171257. that means minus 11,07,125 1 crore 17 lakhs 1,257 something. Here is the same points in 1927. Okay, minus something value it is. Okay, the longitude values differs by about a second, while the latitude value are around 500th of a second.
ओके, जहाँ पर हम देखते हैं क्या ना, यहाँ पर डिफर कर रहा है सेकंड का वैल्यू जो है। ओके, लैटिट्यूड और लैटिट्यूड के अंदर में। ओके, इन द लास्ट 15 years satellites data has provide geodesists when new measurements to define the best earth fitting spheroid। हम लास्ट 15 ईयर में सैटेलाइट डेटा को हमने प्रोवाइड कर रहा हूँ जियोडेसिस्ट के लिए। हम तो डिफाइन क्या कर रहे हैं कि बेस्ट अर्थ फिटिंग स्फेरॉइड हम मेजर कर रहे हैं, व्हिच रिलेट्स कोऑर्डिनेट्स टू द अर्थ सेंटर्स ऑफ मास। रिलेट कर रहा है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ द अर्थ सेंटर ऑफ द मास। ओके, एन अर्थ सेंटर जियोसेंट्रिक, अर्थ सेंटर जो है जियोसेंट्रिक, एंड डेटम यूजेस द अर्थ सेंटर, डेटम यूज करते हैं हम अर्थ सेंटर में ऑफ मास ऑफ एज द ओरिजिन, मास ऑफ द ओरिजिन में। द मोस्ट रिसेंटली डेवलप्ड एंड वाइडली यूज्ड डेटम ऑफ द वर्ल्ड जियोडेटिक डेटम सिस्टम 1984 WGS-84 हम रिसेंटली हम डेवलप कर लिया ये डेटम। तो वर्ल्ड WGS 1984 ओके, इट सर्व्स द एज द फ्रेमवर्क फॉर लोकेशनल एंड मेजरमेंट वर्ल्ड वाइड। वो लोकेशन का मेजरमेंट करते हैं मेजरमेंट वर्ल्ड वाइड के लिए। ए लोकेशन डेटम अलाइंस इट्स पेरियड एंड टू क्लोजली फिट द अर्थ सरफेस इन ए पर्टिकुलर एरिया। ये लोकल डेटम जो है अलाइन करते हैं कि स्पेरियड टू क्लोजली फिट, जो क्लोजली फिट है अर्थ सरफेस के बराबर इन पर्टिकुलर एरिया में। तो ये पॉइंट on the surface of the earth spheroid is matched to a particular area। so the point है वो सरफेस के लिए भी और स्पेरियड के भी मैच कर रहेंगे। ओके, पर्टिकुलर एरिया में। ओके, so position on the surface of the earth, so position on the surface of the earth, the point is unknown, the point is known as the origin point। okay, the point जो है वो origin point है of the datum, thus coordinates of the origin points are fixed। जो coordinates है उसका origin points are fixed and all other points are calculated from it, and हम calculate करते हैं इससे। okay, the coordinate systems origin of a local datum जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ओरिजिन कहाँ से होता है ना, ये लोकल डेटम में इज नॉट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, इट इज नॉट द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, लोकल डेटम इज नॉट ए सेंटर ऑफ द अर्थ, लोकल डेटम जो नहीं है सेंटर ऑफ द अर्थ नहीं है। ओके, the center of the spheroid of a local datum is offset from the earth center। the center of the spheroid of a local datum is offset from the earth center। तो अर्थ सेंटर में ऑफसेट होते हैं। द नॉर्थ अमेरिकन डेटम इन ऑफ 1927 जो है NAD 27 एंड द यूरोपियन डेटम जो 1950 में लोकल डेटम्स है NAD 27 एंड इज डिजाइन टू फिट नॉर्थ अमेरिका रिस्पॉन्सिबली वेल व्हाइल ED 50 वाज क्रिएटेड फॉर द यूज ऑफ इन यूरोप। ओके, ED 50 जो यूरोप में क्रिएट हुआ है ए लोकल डेटम इज नॉट सुटेड फॉर यूज आउटसाइड द एरिया फॉर व्हिच it was designed। ओके, लोकल डेटम जो नॉट सुटेड नहीं है जो आउटसाइड एरिया में। ओके, नेक्स्ट है। तो अब देखिए क्या ना, ये है अर्थ सेंटर जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पर हम देखेंगे लोकल जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर है एंड इट इज़ द अर्थ सेंटर जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अर्थ सेंटर यहाँ पर अर्थ सेंटर जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड इट इज़ लोकल जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, इट इज़ लोकल जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे कि अर्थ सरफेस जो है इट इज़ अर्थ सरफेस एंड अर्थ सेंटर्ड WGS 84 डेटम जो है इट इज़ अर्थ सरफेस। ओके, इट इज़ Earth oriented WGS 84 datums and it is local NAD 27 datum, it is local, those are local datum. Okay, NAD 27. Okay, so understanding the map projection and last is there are two horizontal datum used almost exactly in North America. These are North American datum of 1927 NAD 1927 and the North American datum of 1983 NAD 1983. Okay, NAD 1927 is the North American datum of 1927 used the Clark 1866 period to represent the shape of the earth. उसको शेप ऑफ द अर्थ उन्होंने रिप्रेजेंट करते हैं, शेप ऑफ द अर्थ। ओके, उसको रिप्रेजेंट करते हैं क्लार्क ने
किया है. Okay, the origin of the datum is a point on the earth. The origin of the datum is a point on the earth. Okay, जो डेटम है origin है, और डेटम का जो origin है, ये जो वो पॉइंट क्या करते हैं ना, अर्थ का पॉइंट करते हैं. ओके, but the earth referred to as Midas Ranch in Kansas. Okay, एरिया है कांसास में, ranch of Kansas. Many NAD 1927 control points were calculated from observation taken to in the 1800s. Okay, so क्या ना, मैनी नेट जो 1927 में कंट्रोल पॉइंट जो वहाँ पर कैलकुलेट किया था, तो वहाँ पर ऑब्जर्वेशन के लिए उन्होंने 1800 में किया था. ओके, द कैलकुलेशन वर डन मैनुअली एंड इन सेक्शन ओवर मैनी ईयर्स. ओके, जो कैलकुलेशन हम मैनी ईयर्स में डिफरेंट ईयर्स में कैलकुलेट कर रहा है. देयरफॉर एरर्स वेरीड फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन. ईयर्स जो वेरीड कर रहा है स्टेशन टू स्टेशन में. नेट 1983 मेनी टेक्नोलॉजीज एडवांसेस इन surveying and geodesy since the establishment of NAD 1927. जो NAD 1983 many technology advances and survey और geodesy since को established किया गया है NAD 1927 के अंदर. इलेक्ट्रॉनिक थियोडलाइट्स यूज करते हैं हम, GPS सैटेलाइट्स, वेरी लॉन्ग बेस लाइन्स, इंटरफेरोमेट्री यूज करते हैं, डॉपलर सिस्टम में हम यूज करते हैं. रिवेल वीकनेस इन द एक्सिस्टिंग नेटवर्क ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स को हम वीकनेस जो जहाँ पर है कंट्रोल नेटवर्क में, वहाँ पर भी हमने सॉल्व किया है, नेटवर्क को सॉल्व कर लिया है. Differences become particularly notably when linking existing control with the newly establishment surveys. The establishment of a new datum world allowed for a single datum. Okay, सिंगल अलग क्या करता है, सिंगल डेटम के टू कवर कॉन्स्टेंटली, जो कवर करते हैं कॉन्स्टेंटली नॉर्थ अमेरिका एंड सराउंडिंग एरिया को कंसेंट करते हैं. ओके, तो कंसिस्टेंटली नॉर्थ कवर करते हैं नॉर्थ अमेरिका एंड इट्स सराउंडिंग एरिया. ओके, न्यू डेटम. द नॉर्थ अमेरिकन डेटम 1983 इज बेस्ड अपॉन बोथ अर्थ एंड सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन. जो बेस्ड अपॉन क्या किसका ऊपर, सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन के ऊपर. ओके, एंड यूजिंग द GRS 80 स्पेरोइड एंड यूज करते हैं GRS 80 को स्पेरोइड के. द ओरिजिन फॉर दिस डेटम इन द अर्थ सेंटर ऑफ मास, and so the origin of for this datum is the center of the mass. This affect the surface location of all longitude and latitude values enough to cause location of previous control points in North America is to shift. Okay, the affect surface location of the longitude and latitude values जो लोकेशन का प्रीवियस कंट्रोल जो पॉइंट्स है उसको चेंज कर लिया, शिफ्ट हो गया है. ओके, समटाइम्स एज मच 500 फीट. सो ये 500 फीट हो गया है. ये 10 ईयर मल्टीनेशनल एफर्ट टाइड टुगेदर इन ए नेटवर्क ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स. ये कंट्रोल पॉइंट जो है और यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, मैक्सिको, ग्रीनलैंड, सेंट्रल अमेरिका एंड कैरिबियन become because NAD 1983 is an earth-centered oriented system. Okay, it is compatible with global positioning systems. ओके, इट इज compatible with ग्लोबल सिस्टम पोजिशनिंग जो सिस्टम GPS डेटा है उसका उस पर compatible होते हैं. द न्यू GPS डेटा एक्चुअली रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम 1984. जो न्यू GPS डेटा है वो रिपोर्टेड कर रहे हैं क्या, कहाँ पर ना, वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम्स के अंदर 1984 WS-1984 कोऑर्डिनेट सिस्टम के. द Happen, there is an ongoing effort at the state level to readjust the NAD 1983 datum. तो उन्होंने ongoing effort कर रहा है, effort दे रहा है the state level readjust the NAD 1983 datum के ऊपर. Okay, to a highest level of accuracy using state of the art surveying techniques. Okay, अर्थ सर्विंग टेक्निक्स के ऊपर. नॉर्थ अमेरिकन डेटम दैट वर नॉट वाइडली अवेलेबल व्हेन द NAD 1983 डेटम वाज बीइंग डेवलप्ड.
ओके, जो डेटम है वो वाइडली अवेलेबल नहीं था, नेट 1983 डेटम डेटा जो बिंग डेवलप किया गया था नॉर्थ अमेरिका में। दिस रिपोर्ट नोन एज द हाई एक्यूरेसी रेफरेंस नेटवर्क, जो हाई एक्यूरेसी रेफरेंस नेटवर्क और हाई प्रिसिशन जीपीएस नेटवर्क इज ए कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट बिटवीन द नेशनल जियोडेटिक सर्वे एंड द इंडिविजुअल स्टेट्स, जो कोऑपरेट कर रहा है, कहाँ पर कर रहा है, नेशनल जियोडेटिक सर्वे के अंदर एंड इंडिविजुअल स्टेट्स के अंदर वो कर रहा है, जो हाई प्रिसिशन जीपीएस नेटवर्क बनाया गया था। ओके, करेंटली ऑल स्टेट्स हैव बीन रिजर्व्ड but not all of the data have been released to the public yet. Okay, all data has not been released to the public yet. 33 states are published as the November 19. Okay, तो यहाँ पर अमेरिका की बात किया है, तो ये है इसका टॉपिक जो जियोग्राफी डेटम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ओके, सो थैंक यू फॉर सीइंग एंड I think it will be helpful for your confusion, and it is clearly it's described what is datum, what is this period. Okay, so thank you. Okay.